हे गाइस, सो आज हम आखिरी लेसन करने वाले हैं परसेंटेज एंड रेशियो का। सो इसीलिए ये इम्पॉर्टेंट लेसन है। और दूसरी चीज़ क्या है दैट वी आर गोइंग टू स्टडी रेशियो एंड proportion. Now generally people do not have a complete idea कि यार how is ratio different from proportion, right? They are not exactly the same thing. और आपको क्वेश्चन देख के समझना होता है कि यार ये रेशियो यूज़ कर रहा है या प्रोपोर्शन यूज़ कर रहा है। तो आज जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं सारे, तो उसमें हम दोनों कॉन्सेप्ट्स यूज़ करेंगे, ठीक है? सो फर्स्ट व्हाट वी विल डू, विल गो थ्रू दिस कॉन्सेप्ट्स, विल अंडरस्टैंड हाउ दे आर डिफरेंट, and then we will solve a lot of PYQs. Okay, so this is what our approach is going to be, and this is a topic जिससे बहुत सारे questions आए हुए हैं, तो this is not something you can miss, right? That's not an option. तो आज का जो लेसन है वो तो ध्यान से करना ही करना है, ठीक है? So let's get started. अब थोड़ा सा मैं अपने बारे में बता देता हूँ। सो माई सेल्फ कार्तिक, और मैंने 2017 में CSE निकाला था विद एन AIR 529. But the more important aspect which I want to highlight is that I have a very good understanding of all the aptitude exams in the world, right? So CSAT में ही मेरा 160 plus score है. Besides that, I am an IITian. और GMAT में भी मेरा टॉप 1% स्कोर है इन द वर्ल्ड, राइट? सो इतने सारे एग्जाम्स, बीट गेट या IES जो मैंने लिखा हुआ है, द गोल बिहाइंड टेलिंग यू ऑल दिस इज ये सारे एग्जाम्स एप्टीट्यूड एक हाई लेवल पे टेस्ट करते हैं। सो मैनेज टू गो थ्रू ऑल ऑफ दिस, तो इसीलिए इन सबको यूज करके आपके लिए बहुत सिंपल, इजी एंड बेस्ट CSAT कोर्स देने का आई हैव डिसाइडेड, एंड दैट इज व्हाई वी आर डूइंग ऑल ऑफ दिस, ठीक है? Now, one more little thing is that with this lesson you can actually find subtitles, English subtitles. तो जिनको भी लगता है कि जब मैं हिंदी यूज़ करता हूँ, if you are facing any issues while I use Hindi, all you need to do is go to the settings, which is the gear icon, right? And then you can select the subtitles and select English India. Now you can do that on your mobile phone, you can do that on your laptop, tablet, whatever you are doing, right? So let's get started with the concepts. Now, first we need to understand what is ratio. Okay. Now, ratio here I've written is a comparison of two numbers or quantities by division, and it is denoted by this symbol. Okay. Now, what this means is that let's say you get 20 marks out of 30 in a test. Okay. Then your friend gets 10 out of 30 in the test. Okay. So let's say for 1 second we forget about the total marks. And then I ask you, what is the ratio of your marks, right? So what is the ratio of your marks to your friend's marks? So that ratio would be 20 divided by 10, which is 2 divided by 1. Now I wouldn't write it, I wouldn't leave it as 2 divided by 1. इसको हम कैसे लिखेंगे? हम इसको लिखेंगे 2:1, ठीक है? तो इसीलिए मैंने लिखा रेशियो कैन बी ट्रीटेड एज अ फ्रैक्शन, ठीक है? So a ratio is nothing but a comparison of two numbers by division. I'm comparing this marks of 20 and this marks of 10 by dividing 20 by 10, and then I get that they are in the ratio 2:1, because in fraction I got 2 divided by 1. So this symbol denotes ratio. Okay. Of course, make sure that when you're taking ratio, both the quantities are in the same unit. Otherwise, it would be wrong, right? So let's say I want to compare two weights. A person is, let's say, 10 kgs, let's assume for now. And other I've written as the other person is 200 grams, right? Now, if I want to take the ratio, first let's convert both the things into kgs, right? Don't take ratio like this. So I will do 10 kg divided by 2 kgs, right? So that gives me ratio is 5/1, in which actually we will write as 5:1. See, ratio does not have any unit, right? So in order to remove any unit, these units need to be cancelled. So they need to be in the same unit. ठीक है? So this is all you need to understand about कि ratio क्या होता है. अब ratio को जब हम apply करते हैं, तो उसको हम proportion कहेंगे. Now what is proportion? Proportion is saying that टू डिफरेंट रेशियोज आर एक्चुअली इक्वल टू ईच अदर, ठीक है? तो रेशियो का एप्लीकेशन है, मतलब अगर मैंने बोला मेरे पास 4 नंबर है ABCD, ठीक है? एंड इफ आई से A डिवाइडेड बाय B इज इक्वल टू इज द सेम एज C डिवाइडेड बाय D,
राइट? मतलब ए और बी का जो रेशियो है वही रेशियो सी डिवाइडेड बाय डी का है। जैसे एग्जांपल, इफ आई से 1 डिवाइडेड बाय 2 इज द सेम एज 2 डिवाइडेड बाय 4, तो ये रेशियो सेम है ना, राइट? सो जब मैं दो रेशियोज को इक्वल करूंगा देन आई विल से आई एम टॉकिंग अबाउट प्रोपोर्शंस, राइट? अब ये हो गया फ्रैक्शन फॉर्म में, बट एक्चुअली व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट रेशियोज वी नीड टू राइट टर्म्स इन द सिंबल ऑफ रेशियो। तो इसको हम कैसे लिखते हैं? 1:2 फ्रैक्शन है तो इसको मैंने लिख दिया ऐसे, 2:4, 2 डिवाइडेड बाय 4 ऐसे, ठीक है? और अब मैं कहना चाहता हूं दैट दीज टू फिगर्स इंडिकेट द सेम थिंग, तो उसके लिए क्या करते हैं हम? ये सिंबल यूज करते हैं, 2 साथ में, राइट? दिस वन, ओके? सो दिस इज सेम एज दिस, ठीक है? क्लियर? So four quantities are said to be in proportion if the ratio of the first and second quantities is equal to the ratio of third and fourth quantities. तो रेशियो एक बेसिक कॉन्सेप्ट है और प्रोपोर्शन उसको यूज कर रहा है, राइट? कि अगर मैंने क्वेश्चन में दिया कि 4 नंबर है, जो एक और इज टू बी का रेशियो है वही सी इज टू डी का है, सो दिस इज एन एप्लीकेशन ऑफ रेशियोस एंड हेयर देन दिस इज व्हाट वी कॉल एज प्रोपोर्शंस, ठीक है? तो आई गेस नाउ ये डिफरेंस क्लियर हो गया है, ठीक है? तो अब क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले एक और छोटी सी चीज, दैट ऑल द लेसन्स, एंटायर लेसन का जो स्टडी मटेरियल है और जो उससे रिलेटेड थ्योरी है, सारी चीजें आपको एक ही जगह मिल जाएंगी। व्हाट इज दैट प्लेस? ऑल यू नीड टू डू इज यू नीड टू गो टू kalam.in/upsc -csat -2024। तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। अगर आप यहाँ लिंक पे जाओगे एंड यू जस्ट क्लिक ऑन ज्वाइन फॉर फ्री, तो आप एक ही जगह पूरा कोर्स पाओगे एंड देन यू कैन कंज्यूम इट वेरी वेरी इजीली। तो कुछ मिस हो गया हो या कुछ रिवाइज करना हो, आई वुड सजेस्ट कि यू डू दिस एंड दैट वुड मेक इट वेरी वेरी सिंपल फॉर ऑल ऑफ यू, ठीक है? तो अब हम जाते हैं कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की तरफ, ठीक है? सो एज ए ऑलवेज से कि मैक्सिमम लर्निंग तो हमेशा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही होगी, है ना? तो इस क्वेश्चन को अप्रोच करते हैं, ठीक है? लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। Two equal glasses of same type are respectively 1/3 and 1/4 full of milk, ठीक है? अगर दो ग्लासेस है, दोनों का सेम टाइप है, मतलब दोनों का वॉल्यूम सेम है, तो अब मैं अपना कैलकुलेशन इजी करने के लिए क्या करूंगा? दो ग्लास है, दोनों का वॉल्यूम 1 यूनिट ले लेता हूँ, ठीक है? नाउ टू इक्वल ग्लासेस आर रिस्पेक्टिवली 1/3 एंड 1/4 फुल ऑफ मिल्क, तो इस ग्लास को ए मान लिया, इसको बी मान लिया, ठीक है? सो मिल्क कितना है? ए में मिल्क है 1/3 एंड बी में हो गया 1/4, राइट? क्योंकि मैंने 1 ही लिया है तो मैं डायरेक्टली 1 का 1/3 कितना होता है? 1/3 ओनली, राइट? 1 into 1/3 इज 1/3। टू मेक माई कैलकुलेशन सिंपल आई रन दैट, ठीक है? तो इसमें मिल्क 1/3 है और इसमें 1/4 मिल्क है, ठीक है? सो दे आर देन फिल्ड अप विथ वाटर एंड द कंटेंट्स आर मिक्सड इन अ पॉट। मतलब कि अब जो बाकी बचा हुआ है इसको मैंने उसमें वाटर डाल दिया, विच मीन्स 1 में से 1/3 माइनस करूं तो 2/3 इसमें वाटर डाला ए में, और 1 में से 1/4 माइनस करूं विच इज 3/4, इतना मैंने वाटर डाला बी में, ठीक है? एंड देन आई मिक्स ऑल दिस कंटेंट इन अ पॉट। अच्छा, तो मैंने ए और बी दोनों को मिला दिया है, आई मिक्स देम, आई फॉर्म्ड अ मिक्सचर। what is the ratio of milk and water in the pot? मतलब what I have to do is I have to find total milk, right? Total milk divided by total water। जब ये फाइनली मिल जाएगा फ्रैक्शन फॉर्म में, उसको मैं रेशियो फॉर्म में ऐसे लिख दूंगा, ठीक है? सो टोटल मिल्क कितना है? इट इज 1/3 this plus 1/4, right? And how much is total water? Total water is 2/3 plus 3/4, ठीक है? Now LCM is 12, so if I multiply and divide every term by 12 in the numerator and denominator, ठीक है? So let's do this। 3 और 4 का LCM 12 है, so what do I get? 12 3s are 12 divided by 3 4, so 4 plus here I get 3 divided by 12 divided by 3 is again 4, 4 2s are 8, and then here I get 3 multiplied by 3 which is 9. So this is 7 divided by 17. So if I write this in ratio form, I will write it as 7:17. So this is my final answer, ठीक है?
Clear? I think it's a very simple question. So this is like an introduction to ratios so that आपको समझ आने लग जाए कि अच्छा what is being asked है, right? So ratio of milk and water. So I'll write in milk here and water here. ठीक है. अब इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं. वेरी सिंपली वी विल सॉल्व. ठीक है, फ्रैक्शंस हमने पढ़ लिया है तो बहुत प्रॉब्लम नहीं आएगी. ठीक है. नाउ लेट्स हैव अ लुक एट दिस क्वेश्चन. The total emoluments of two persons are the same, but one gets allowances to the extent of 65% of base salary or basic pay, and the other gets allowances to the extent of 80% of his basic pay. मतलब the total earning is the same, but their basic pay is different, and the allowance is also hence slightly different in terms of percentage of basic pay. बहुत सिंपल शब्द में बात करते हैं कि लेट्स से देर आर टू पीपल. तो फर्स्ट पर्सन का बेसिक पे x है, सेकंड पर्सन का बेसिक पे y है. ठीक है. अब टोटल इनकम कितनी है फर्स्ट पर्सन की? ये हो गया बेसिक पे ऑफ फर्स्ट पर्सन प्लस अलाउंस विच इज 65% ऑफ द बेसिक पे. ठीक है. सो इसकी इस पर्सन की टोटल इनकम होगी पॉइंट x प्लस 0.65x. ठीक है. क्लियर है? बिकॉज द फर्स्ट पर्सन बेसिक पे इज एक्स, तो बेसिक पे तो मिलेगा ही मिलेगा. उसके ऊपर द पर्सन इज अर्निंग अलाउंस विच इज 0.65x. ओके. द अदर पर्सन इज गेटिंग अलाउंस ऑफ 80%, विच मीन्स वाई तो मिल ही रहा था, उसके ऊपर वी आर एडिंग 0.8y. ओके. दिस बिकम्स 1.65x, दिस इज 1.8y. ठीक है. Now the question is asking ratio of basic pay the former to the ratio of basic pay of the latter. ठीक है. Now we know that the total earning is equal, right? Okay. So what we need to do is we can just equate it, isn't it? Right? So what we need to do is, and what do we need to find? Ratio of basic pay of former to latter. So former is x, latter is y. So we need to find x divided by y, right? So x divided by y becomes 1.8 divided by 1.65, which I can, let's say, write as 180 divided by 165. So if you cancel, actually 15 12 is 180 and 15 times 11 is 165. So x divided by y is 12 upon 11. So the ratio I will get as 12 is to 11, right? Isn't it? ठीक है. Again, this also was not a very difficult question. You just had to find their incomes and equate them, है ना? इतना ही करना था. So this is again, तो fractions जो हमने पहले कवर किया हुआ है, तो वो अगर आपका क्लियर है तो ये सारे बहुत easily होने लगेंगे. ठीक है. So this is another question related to income. तो इसको भी देख लेते हैं. ठीक है. By the way, these are all PYQs. I've written here as well, but still, just in case if you're confused, I'm just letting you know. So the question says the monthly incomes of Peter and Paul are in the ratio 4:3. अच्छा. So पीटर की इनकम को मैं x ले लेता हूँ. ठीक है. पॉल की इनकम को y ले लेता हूँ. ठीक है. So they are saying this ratio is same as this. Now 4/3 is 4:3, right? So this we know. Okay. Then their expenses are in the ratio of 3:2. Okay. So let the expense of the first person be A of Peter and the expense of Paul be B. Okay. Now this we know is 3:2. If each saves 6,000 at the end of the month. Okay. So what is the saving? The saving of the first person is X minus A, right? X is the income, A is the amount they are spending, right? And the other persons would be the same, right? The other persons you can calculate as y minus b. So other person's saving is y minus b. And they're saying both of them are saving 6,000. Okay. Now what do you need to find? Their monthly incomes. So you need to find x and y. Okay. So let's try to find it. Now all we needed in terms of information from the question, we have it, right? So what we can do is, let's write here. So from the first this equation, so what I can write is 3x
is equal to 4y, or I can write 3x minus 4y is equal to 0. Okay. The second equation I get, this goes here and this goes here. So I get 2a is equal to 3b, which means 2a minus 3b is equal to 0. Okay. And we have x minus a is equal to y minus b is equal to 6000. So a can I write as x minus 6000, isn't it? Right? This equals this. So a is x minus 6000 and b I can write as y minus 6000, right? So I'm trying to get rid of a and b because I need to find x and y. So I get 2x minus 12,000 minus 3y plus 18,000 is equal to 0. So 2x minus 3y plus 6,000 is equal to 0. And the other equation we had was this one in terms of x and y, right? So from this, now what you can do is you can simply substitute, right? So you can do 3x equal to 4y, right? So 3x equal to 4y, which gives me x is 4y over 3. So 2x becomes 8y over 3 minus 3y plus 6000 is equal to 0. So which gives, actually, if you solve this, you'll get y over 3 is equal to 6000, which gives me y is 18,000. Okay. And if y is 18,000, you put here, you will get x as 24,000. Okay. Now you can solve this in a different manner as well. I've picked to solve it like this. But at the end of the day, you've got the values, right? So our answer would be 24,000 and 18,000, right? So that is option A. Okay. So it's all about just converting this into equations, converting ratios into fractions, and that's all you need to do. Okay. Now this is a question I like. Why I like this question, I'll let you know, because this is helping us learn something new. The question says a sum of 2500 is distributed among x, y, z in the ratio half is to 3/4 is to 5/6. Okay. What is the difference between maximum share and minimum share? Okay. Now, whenever I have such ratios that they are in the ratio half is to 3/4 is to 5/6, I don't find it easy to calculate. Okay. So what I will do is I'll try to convert these into integers so that my calculation becomes easy. Okay. Now see one thing. If I say something's in this in the ratio 1 is to 2 is to 4, let's say. Now it is the same as saying that these things are in the ratio 8 is to 16 is to 32, right? Same ही बात है. Why? Because I multiplied this by it, this by it, and this by it. So the ratio it does not affect, right? Why? Because 1 is to 2 is the same as 8 over 16, right? 2 over 4 is the same as 16 over 32. There is no difference, right? So if I can multiply all these numbers by the LCM of 2, 4, and 6, then I can get integers, right? And my calculations will become easy, isn't it? So what is the LCM of 2, 4, and 6? 2 is 2, this is 2 square, this is 2 into 3. So LCM I can write as 2 square multiplied by 3 to the power 1, which is 12. So if I multiply all the 3 by 12, what will I get? I'll get 6. Half into 12 is 6, right? Then here I'll get 9, and similarly here I'll get 10. Okay. Now the sum of 2500 is distributed among 3 people in this ratio 6 is to 9 is to 10. Okay. So here what you can do is you can say that the amount which x gets, that you can write as 6a. Amount which y gets you can write as ya. Amount which z gets you can write as 10a. Why? See, the ratio remains the same. X is to y is 6 over 9, y is to z is 9 is to 10. So I'm not changing anything, right? I've just said that this is 6 multiplied by some number, this is 9 multiplied by that same number, and so on, right? Now what do you know? You know that the sum of all these is 2500, isn't it? So x plus y plus z has to be 2500 because this is how this has been distributed. Now, x plus y plus z is what? 6a plus 9a plus 10a,
which is, if you calculate 25a, so 25a I get is 2500, so I get a is 100. ठीक है. Now what the question is asking, what is the difference between the maximum share and minimum share? So which is the maximum among these? 10a. Which is the minimum? 6a. So z minus x is what they are asking, right? So z minus x is what? 4a. And what is a? 100. So 4a will be equal to 400, which is going to be your answer. ठीक है. Now the only challenging or difficult step here was first converting this to this, and then having that thought process, that presence of mind कि आप इसको 6a 9a 10a ऐसे लिख लो ताकि easily sum 2500 आ जाए और आपका 4a आ जाएगा z minus x. ठीक है. So I think the answer should be option C. ठीक है. हो गया क्लियर. सो ये ऐसा क्वेश्चन है, आई वुड से कि फिर से लिख के सॉल्व करो. सो आई इवन यू कैन पॉज राइट नाउ और यू कैन टेक सम टाइम लेटर. सो व्हाइल मेकिंग नोट्स ट्राई टू सॉल्व दिस अगेन by writing yourself. That's when this will become natural, this step which I did here. ठीक है. So as you're seeing, slowly questions are getting slightly more progressive and difficult. Okay. Now let's have a look at this question. The ratio of two-digit natural number to a number formed by dividing its digits or reversing its digit is 4:7. The number of such pairs is, okay. Now let's say that number you write as xy. What I mean by xy is not x multiplied by y. जैसे अगर 32 है तो 32 मतलब x is 3 y is 2, right? अगर इस तरह मेरे पास नंबर है, the digits are xy, okay, it's not x multiplied by y. ठीक है. सो x 32 को मैं 30 प्लस 2 लिख सकता हूं, है ना. सो सिमिलरली आई कैन राइट दिस नंबर एक्स वाई एज 10x प्लस वाई, है ना. 32 is 3 into 10 plus 2. Similarly xy is 10x plus y. ठीक है. Then they are saying the ratio of this number to a number formed by reversing its digits. So if I reverse the digits, which is this, so the number I get is 10y plus x, right? Okay. Now they are saying this number, the first one, divided by this number at the bottom, this ratio is equal to, so 10x plus y divided by 10y plus x, this number they are saying is equal to 4:7. So I can write it as fraction. Number of such pairs means they are saying how many values of xy can exist, basically, right? So now let's try to solve it in a much easier manner here. Okay. So all I need to do is I can cross multiply, isn't it? So I'll get 70x plus 7y is equal to 40y plus 4x. Okay. So x I'll take here, this goes here. So I'll get 66x is equal to 33y. So I get y is equal to 2x. So my xy can be in such a form that y is twice of x. Okay. Which, how many numbers can I write? So if I take x, how many? 2 digits. So x cannot be 0, right? 2 digit number है. So x can be 1. So y2 I get 12 एक number है. If x is 2 I get 24. X is 3 I get 36. X is 4 I get 48. X is 5 I get 10, which I can't write because then 3 digit number हो जाएगा ना. So I get only these 4 possibilities for xy. ठीक है. तो जैसे यू कैन इमेजिन, राइट, 12 को उल्टा करूंगा 21 आएगा. सो 12 डिवाइडेड बाय 21 क्या आएगा? 4:7 ही आएगा. सेम गोज फॉर द अदर 3. सो आई कैन फाइंड 4 सच वैल्यूज ऑफ एक्स वाई फॉर विच इफ आई रिवर्स इट आई विल गेट दिस रेशियो एज 4:7. ठीक है. इंटरेस्टिंग है ना क्वेश्चन. क्वेश्चन देख के लग नहीं रहा होगा कि ये सॉल्व भी कर सकते हैं ऐसे लिख के, बट वंस यू कन्वर्टेड टू दिस फॉर्म आपको बस क्रॉस मल्टीप्लाई करना है एंड इक्वल, आफ्टर डूइंग इट, इक्वल टू 4:7. ठीक है. बस इतना ही करना है आपको. y इज इक्वल टू 2x मिल गया एंड देन यू कैन जस्ट थिंक कि x की कितनी वैल्यूज हो सकती हैं ताकि y मिल जाए. तो ऐसे 4 वैल्यूज आए एक्स वाई के, 12, 24, 36 एंड 48. ठीक है. सो
So I get 4 different possibilities. So I can select answer as option B here. ठीक है, clear है? Now this is a very good question, this one, because this makes you think. This is not something you can just directly see, write the question and then you can, directly get the answer. Brain use करना है, ठीक है? तो ध्यान दो. And for me, this is like the most challenging question of all we have done today. So extra attention is needed here. ध्यान दो और सोचो, think while I'm talking about it. ठीक है? तो a bottle contains 20 liters of liquid A. ठीक है, तो एक बॉटल है, उसमें 20 लीटर्स ऑफ लिक्विड ए है. ठीक है, 4 लीटर्स ऑफ लिक्विड ए इज टेकन आउट ऑफ इट. सो इनिशियली ए लिक्विड 20 था. ठीक है, अब क्या किया, 4 लीटर्स ऑफ ए लिक्विड इज टेकन आउट एंड रिप्लेस्ड बाय सेम क्वांटिटी ऑफ बी. इनिशियली कोई बी लिक्विड नहीं है, तो अब मैंने 4 लीटर्स ए निकाल लिया. सो हाउ मेनी लीटर्स ऑफ ए आई एम लेफ्ट विथ, इट इज 16. और बी का मैंने 4 लीटर ऐड कर दिया. ठीक है, सो अभी ये कंडीशन है. ठीक है, अगेन 4 लीटर्स ऑफ द सेम मिक्सचर इज टेकन आउट एंड रिप्लेस्ड बाय सेम क्वांटिटी ऑफ बी. अब यहाँ पे लगेगा दिमाग. अब अगर मैं, ये मिक्सचर है, बॉटल में सोचो 16 लीटर ए का है और 4 लीटर बी का है. अब मैं 4 लीटर निकालूंगा तो केवल ए या केवल बी तो निकलेगा नहीं, इजंट इट करेक्ट? विच मीन्स कि थोड़ा ए कम होगा और थोड़ा बी कम होगा. अब ये कैसे सोचें? ठीक है, तो अभी आप देखोगे बॉटल में 80% ए ही है, राइट? तो 16 ए है, 16 लीटर्स और टोटल है 20 लीटर, 16 + 4. तो मैं कह सकता हूं कि 80% जो है, राइट, बॉटल में अभी ए लिक्विड है और 20% बॉटल में बी लिक्विड है. ठीक है, अब अगर मैं 4 लीटर्स इसमें से निकाल लूंगा तो क्या होगा, तो 4 लीटर निकालूंगा तो 4 लीटर का 80% तो ए होगा, मतलब 4 लीटर्स इंटू 0.8 मतलब 3.2 लीटर्स तो ए निकलेगा. इफ आई रिमूव 4 लीटर्स of this mixture, I will remove 3.2 liters of A. And similarly, I can multiply 4 by 0.2, right? Because I'm taking out 4 liters. So I'll get 0.8 liters of B. तो जब मैं 4 लीटर्स निकाला मिक्सचर से, मैंने क्या किया, 16 में से 3.2 लीटर्स कम कर दिया और 4 में से मैंने 0.8 लीटर्स कम कर दिया. अब क्या कह रहे हैं, दे आर सेइंग आफ्टर रिमूविंग दिस इज रिप्लेस्ड बाय सेम क्वांटिटी ऑफ लिक्विड बी, मतलब 4 लीटर भी और ऐड कर दिया. ठीक है, तो अब फाइनली ए और बी कितना है, तो दिस इज 12.8, right? So finally I have 12.8 of liquid A and I have this, if you calculate 4 + 4 8 minus 1 is 7.2. तो फाइनली मेरे को मिला कि A 12.8 लीटर्स और B 7.2 लीटर्स है. अब मुझे बताना व्हाट इज द रेशियो ऑफ लिक्विड A टू लिक्विड B. ठीक है, सो द की इज अंडरस्टैंडिंग दिस स्टेप, राइट? क्योंकि 80% ऑफ द वॉल्यूम इज लिक्विड A एट दिस स्टेज. तो अगर 4 लीटर निकालूंगा तो उसका 80% 3.2 लीटर्स A निकलेगा और उसका 20% 0.8 liters B निकलेगा. Now I just need to calculate this final. So this I can write as 128 divided by 72. If you just calculate, so what can I divide it? Can I divide it by 8? Yes. So this number becomes 9 and this number becomes 16. So this again, if I write in ratio form, this is 16:9. ठीक है, समझ आ गया? सो इसको भी लिखना है. लिखोगे नहीं, सोचोगे नहीं, समझोगे नहीं तो नहीं समझ आएगा. ठीक है, तो इसको दिमाग लगा के लिखो और फिर से रिवाइंड करके प्ले करो अगर समझ नहीं आया है. ठीक है, ट्राई टू राइट इट अगेन because this is a very important question. If you're able to understand and solve this, there are going to be rarely many questions जो आप इस टॉपिक से नहीं कर पाओगे. ठीक है, सो आवर आंसर इज ऑप्शन सी. ठीक है, तो इसके साथ आज हमने बहुत सारे क्वेश्चंस कर लिए. अब आती है होमवर्क की बारी. अब जल्दी से 1-2 मिनट में बता देता हूँ ताकि you can solve this on your own later. So this question is saying in a rare coin collection there is 1 gold coin for every 3 non-gold coins. समझ गया, रेशियो लेना है. So gold coins को G मान लो,
इसको मान लो नॉन गोल्ड को n, ठीक है। सो दे आर सेइंग 1 गोल्ड कॉइन फॉर 3 नॉन गोल्ड, सो ये रेशियो ऐसे लिख लो। 10 गोल्ड कॉइन्स आर एडेड टू द कलेक्शन, ठीक है। सो अगर 10 मैंने ऐड किए और नॉन गोल्ड वैसे ही रखे, ये हो गया। सो इसके बेसिस पे आपको टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स इन द कलेक्शन नाउ क्या हो गया, n प्लस जी प्लस ये 10। अब इसको सोच के आप सॉल्व करने की कोशिश करो। मे बी मैं सही बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ, आप भी सोचो। जरूरी नहीं है कि मैंने बोल दिया है तो वही सही करना है, ठीक है। There are 3 points PQR on a straight line such that PQ is to QR is 3:5, ठीक है। अब ये सोचने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। अब PQ और Q, तो एक पॉइंट Q है। अब इससे मैंने एक पॉइंट लिख लिया P, ये हो गया PQ। अब QR है, अब Q कहाँ हो सकता है, स्ट्रेट लाइन है। तो R कहाँ हो सकता है, R हो सकता है कि इस तरफ भी हो और मे बी इस तरफ भी हो, ऐसा कुछ सोचो। तो ताकि उससे सोच के आप निकालो कि जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं PQ इज टू PR, इसके कितने डिफरेंट आंसर्स आ सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सोचने वाला क्वेश्चन है बट छोटा है, इट्स नॉट लेंदी, वेरी सिंपल। ट्राई टू सॉल्व इट। एंड देन फाइनली जो ये प्रपोर्शन का अच्छा एप्लीकेशन वाला क्वेश्चन है, 30 grams of sugar was mixed with 180 ml of water in vessel A. 40 grams of sugar was mixed in this much of water in vessel B. Same goes for this. तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे रेशियोज देखने हैं शुगर इज टू वाटर का। अब सबके रेशियोज कंपेयर कर लो। अगर शुगर इज टू वाटर का रेशियो ज्यादा है मतलब स्वीटर है, कम है तो लेस स्वीट है, बराबर है तो सेम सिमिलर स्वीटनेस है। बस ये आप सोचो और इसको सोच के बताओ क्या आंसर होगा, ठीक है। So with this I'm shared all the 3 homeworks and giving 3 questions as homework क्योंकि ज़रूरी टॉपिक है। प्रैक्टिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना। सो विद दिस वी एंड दिस सेशन। और आपको होमवर्क एज यूजुअल आपको मेल करना है superk@kalam.in। तो इसको नोट कर लो, अभी तक याद हो गया होगा बट स्टिल जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट एंड नोट इट डाउन प्रॉपरली। सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द मैथमेटिक्स सिलेबस, ठीक है। तो आप देख रहे हो 48% विच इज अप्रॉक्स हाफ, ये वाला सारे चैप्टर खत्म हो गया, बस इतना बचा है, ठीक है। सो दैट इज अ लॉट ऑफ कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ अस। सो आप कमेंट्स में लेट मी नो। सो अभी आधा सिलेबस करके कैसा लग रहा है, क्वेश्चन के आंसर्स किसी में डाउट है वो दैट यू कैन आस्क, राइट। सो प्लीज लेट मी नो ऑल ऑफ दिस एंड विद दिस आई वुड जस्ट end my session and wish you all the best. Hoping to see your homework very, very soon and get back to you. ठीक है? Have a nice day.